Everybody from the previous show is here. Give me a cheer. Thank you. चलो, hey, अपने फोन से बात कर रहे हैं हम लोग डालेगा सब YouTube पे. YouTuber है. Maybe you are for Dhruv Rathi for joining me on this. Yes. पहली बार है एक्चुअली. हाँ. पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कैसे आधे लोग दिखते ही नहीं इस चीज पे बैठे. No, the only you can see only the beautiful people. How the stage works. But yeah, so we have basically want to show this video for context and happy to do a Q&A with all you guys and discuss whatever you guys are thinking. And I'm sure you'll have some critical feedback for our work also. But please keep that to yourself. नहीं on a serious note. On a serious note, हाँ Dhruv को ले लेना. Whatever you guys have, it's totally good. So we're gonna get a volunteer who will pass the mic around. Anybody has a question, raise their hand. Yeah. Yes, sir. Yes. Hello. Hi. Hi, Tanu, and I'm a big fan. Yes. I would not say that you're Shah Rukh Khan as well. So my honest, genuine question is, how do you deal with all the criticism? Because it takes guts to be there and say something like that. I think I'll speak for myself here, and I really want to know how Dhruv deals with it. दोनों के different answers हो सकते हैं. मेरा काफी different answer है. I think to ignore criticism, you have to also ignore validation. So I think ignore both at once. Like I don't care about anybody's criticism, but at the same time I don't care about the validation also. So I'm just like criticism and validation should only come from sources whose work you are inspired by. There are a few people in my life who I really care about. One of them is a comedian who mentored me when I was young and brash, Varun Grover. I always try to yeah, I mean, if he has critique to my work, I won't sleep at night. But if I'm saying there are a lot of these people, there are maybe 5-7 of these people who I really value what they have to say about my work. And one of them, for example, is one. But other than that, I think I have to ignore the criticism and the validation both. Because if you're just soaking in the validation and ignoring the criticism, it's not fair. Either take both together or ignore both and just function being honest to yourself and always reaching out to people who inspire you and sending them your work with passion and asking them what your opinion. I hound Varun Grover to find out what he thinks about my work. Sometimes he's busy, but I am relentless. I have nothing else to do. But I'm saying that's how I deal with it. But I'd love to know what Dhru's answer is. To a certain extent ये मेरे लिए भी ट्रू है कि ये दोनों चीजों को इग्नोर करना सीखना चाहिए. लेकिन हमारा प्रोफेशन कुछ सेंस में बहुत अलग है. एक कॉमेडियन के लिए क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि तेरे जोक्स बेकार थे. लेकिन मैं जो काम करता हूँ उसमें क्रिटिसिज्म ये हो सकता है कि वो एक तरफ ज्यादा लीन करता है, बायस्ड है या ये है. तो मेरे को क्रिटिसिज्म, मैं जब क्रिटिसिज्म को सुनता हूँ तो मुझे एक्चुअली देखना पड़ता है कि एक्चुअली में इसकी वर्थ कितनी है और कितने लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं. जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या वो मुझे सीधा सीधा गालियां दे रहे हैं, सिर्फ ब्लाइंडली कांग्रेस ही बोल रहे हैं, आपटाट बोल रहे हैं, कॉमी बोल रहे हैं, या फिर वो एक्चुअली उनकी क्रिटिसिज्म में कोई वैल्यू भी है. कई बार वो स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर बोलते हैं कि अच्छा तूने ये ऐसा किया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उसमें वैल्यू दिखती है और तब उस क्रिटिसिज्म को एक्चुअली में लेना चाहिए और उससे सीखना चाहिए. ऐसा लास्ट कौन सा मोमेंट था जब तेरे को किसी ने क्रिटिसाइज किया और तू उससे कुछ सीखा और इट वाज टेकन पॉजिटिवली बाय यू? इसमें सबसे बड़ा मुझे लगा था जब किसी ने बोला कि तुम यहाँ पे फैक्ट्स थोड़ी बता रहे हो अपनी वीडियो में, तुम तो अपनी राय बोलने लग रहे हो. उसके बाद से मैंने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, इसको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि कहाँ पर मैं फैक्ट्स बोलता हूँ और कहाँ पे ओपिनियन बोला जा रहा है. और उसके बाद से मैंने हमेशा से डिसाइड किया कि जब भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो कॉर्नर में #ओपिनियन लिखा आएगा जब भी मैं अपना ओपिनियन बोलूंगा, और जब ओपिनियन नहीं बोलूंगा तब ऑब्वियसली फैक्ट्स बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं लिखा रहा हो. तो एक तरह से डिफरेंशिएशन हो गई और लोगों को भी आसानी से समझ में आ गया कि कब वो फैक्ट सुन रहे हैं, नॉलेज सीख रहे हैं और कब वो मेरी राय सुन रहे हैं. एक्चुअली मेरे को इतना आर्टिकुलेट क्रिटिसिज्म नॉर्मली आता भी नहीं है कभी. I don't know what to make of Chubbe. But I hope that answers your question. Who's next? Yeah. So just pass the mic randomly because we have lights coming, so we don't know. We'll give it to you at some point. We can see you. You're looking boy. Yeah, hi. Vijay.
also a big fan. Thank you. मुझे नहीं पता था साइमन माइक दे देंगे मैं सवाल भूल गया actually like you just said you're gonna perform in like 150 cities across the world. I think you already started going abroad. Yeah. और इंडिया में भी काफी टूर किए हो हाँ. तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स में ऐसा क्या डिफरेंस लगा I don't need a mic. Sure. Do you think that cracking anti-Modi jokes outside India is easier than cracking in India? No. Oh, the NRI audience is. Thank you for coming, guys. They are delusion, has no cure. Like I'll tell you, the first show we did here, the first show we did in Munich, we played the exact same video that you guys watched. Exact same video, and there were two people who were furious at the video. And they were like, we loved your stand-up, it was so well-rounded. Firstly, that's a lie, it's not. Secondly, they were like, you just shouldn't have showed us this video, we didn't want to see this video, we are like, this is not cool and we shouldn't have done that. So I'm saying, abroad, I think a lot of Indians, they are very... So firstly, I get the homesickness, I get that you'll miss home and you are very motivated and what is going on back home and movies are distributed here, you'll go out to watch those movies, there's a lot of cultural things that you are actually more rooted in culture than probably I am also when I go back home. And I know that feeling, so I think any sort of criticism that comes, and some people point out some really stupid things also, like the person once told me, okay, this is all great, but do you know there are Pakistanis also in your audience? And I'm like, but they breathe oxygen and so do we. Like, I mean, what do? I don't think I can. So I think abroad it gets very tricky. Like there's this thing called Friends of BJP Facebook page, and they just send like random emails to people who bought tickets to my show saying the show is cancelled, and then they call the Indian ambassador and tell them how is this person coming here. Like the Indian embassy tweeted about me or posted about me. I mean, some friends of BJP guys were like, how can I post about this? And the ambassador was like, yeah, it's just an Indian artist coming, I don't know who he is also. I just posted because this first time a comedy show, but yeah, if you have an issue, I'll delete it. So there is a lot of issues abroad, and I get that it's all from well-intended people who are very rooted in India. But I think it's time they get real and just better informed. And have a proper conversation. Nobody is averse for that. Like if you meet me or Dhruv somewhere, we'd be totally open to have a proper conversation with you if it's civil and if it's objective. उनकी साइड काम नहीं करता है, हम हमेशा रेडी होते हैं, कोई हमारे साथ आता ही नहीं है बीजेपी वाला बात करने के लिए। हाँ वो तो आता नहीं। Cool. Who's next? Hi, I'm Shruti. Great set, Kunal. It's really funny. Yeah. My question to both of you is, how do you feel about all of Bollywood not having a spine whatsoever? I think Dhruv should answer that first because he has more of a spine than me also. I think. He takes them on like totally. मैं और क्या मैं ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट रहता हूँ तुझसे। मैंने तेरी कॉमेडी आज पहली बार देखी थी। उसके बाद लगा अच्छा मैं तुझसे तो ज़्यादा ही सेफ हूँ। I think बॉलीवुड में इतना कंपटीशन है कि वहाँ पे हर कोई आगे आना चाहता है। इतना कंपटीशन चल रहा है, कोई अपना करियर बनाना चाह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उन्हें लगता है उनका करियर थ्रेटन हो रहा है उससे, तो वो नहीं करते फिर। So they are at a situation you are saying they have too much to lose, so they are. And I think the same for many journalists also, the same for many other fields also. Yeah, but like recently somebody posted this question and I was discussing it with a very popular person in Bollywood who did not show up at this, these Modi events that keep happening. And he had a very, I don't know if I can name him, but he had a very logical argument to not be there. And he said, today if you call me in the garb of celebrating 150 years of Mahatma Gandhi, I'll probably turn up. But I know where this is headed. Tomorrow it will be for Veer Savarkar and Monday it will be for Godse. So I'll have to draw the line somewhere
I might as well face the music and draw it first. So there are a lot of people in Bollywood who you do not see, who do not show up, but it is just that I think it's not in their interest to be very vocal about it. Like Hindi में कहा होता है कि Actually, most are very neutral if you think about it. Most don't speak up, but most also don't support the government. हाँ काफी लोग वो दूर रहना चाहते हैं controversies से. दूर रहना चाहते हैं. But I'm saying काफी लोग हैं जो मतलब चलता तीर लेके डाल देते हैं. पर काफी लोग हैं जो मतलब बोल रहे हैं कि ठीक है आप कर लो, हम आएंगे नहीं, पर हम कुछ बोलेंगे नहीं सोशल मीडिया पे, हम अपना काम करें. काफी लोग ये बोलते हैं एक्टर्स भी कि हम पीछे से सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम सामने आकर नहीं बोलेंगे इस चीज. हाँ मतलब if you see like the whole family, they've been pretty vocal about where they are on this political front, but of course there are the Bachchans who will not. But I'm saying it's a mix. So objectively, if we look at it, I think ऐसे टाइम में अगर कोई उनके साथ जाके नाच नहीं रहा है तो वो हमारे साथ ही है. मैं तो उसको एज अ पॉजिटिव ही देख रहा हूँ, मोर और लेस. मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट इलेक्शंस के बारे में. लाइक अभी भी जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं, कोई भी वायबल अपोजिशन नहीं दिख रहा है. डू यू थिंक टिल 2024 कांग्रेस से तो थोड़ी उम्मीदें लोगों को कम हो चुकी हैं, बट एज सिटीजन्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विल देयर बी एनीथिंग लाइक अस एज अ यूथ व्हिच विल कम अप एंड स्टैंड फॉर इट? थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. But should start. I do have really good expectation from you. I'm building my answer, but you मेरा तो कोई प्लान नहीं है पॉलिटिक्स में आने का. तो मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि 2024. बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई थिंक कि 5 से 5 साल बाद देखना क्या ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते. मैं इतना नहीं सोचता एक्चुअली. मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ. आज से अगले 6 महीने 1 साल के बाद सोचूं कि क्या पॉसिबल है, क्या हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है. देखो, एक आपको इसमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जो लीडर्स ऑर्गेनिकली ब्रोक आउट हुए, जैसे जो ऑर्गेनिकली मूवमेंट को लेके जो लीडर्स ब्रेकआउट हुए, अगर वो अरविंद केजरीवाल है तो वो कांग्रेस के वक्त हुआ जब मीडिया मोदिया नहीं था. जो कन्हैया कुमार अगर उसको आप ब्रेकआउट लीडर मानो, या जिग्नेश मेवानी उसको ब्रेकआउट लीडर मानो. जिग्नेश मेवानी ब्रेकआउट हुआ, मूवमेंट से ब्रेकआउट हुआ, he became a movement leader and then he broke out and became mainstream and he became an MLA. और उसके बाद मीडिया ने उसको डिस्क्रेडिट करने का ही काम किया. ठीक है, कन्हैया को आप देखो तो वो कोइंसिडेंटली उसको जेल में डाल दिया. अभी निकला भाई भयंकर ओरेटर, क्या करे उसका, तो आके दे दी उसने फायरिंग स्पीच, यूट्यूब के थ्रू चल गया. उसके बाद उन्होंने इसको सिर्फ डिस्क्रेडिट करने का काम किया. तो जब तक ये मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं ना, और जब तक ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो काफी मूवमेंट चल रही है. पर ये बस डेफिनेटली लीडर्स ब्रेकआउट बहुत ही मुश्किल है. किसी भी अगर आज कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई कितना भी अच्छा हो, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है उनके लिए अपने आप को एक नया पॉलिटिकल लीडर दिखाना, क्योंकि मीडिया आएगा, मोदिया मतलब डिस्क्रेडिट करेगा ही करेगा, डिफेम करेगा ही. चाहे तो अगर तुम किसी भी तरह से खड़े हो इनके अगेंस्ट. नहीं मतलब आज आप अगर केजरीवाल को भी पूछ लो कि अगर वो 2019 में बोलता कि मुझे बिजली के बिल फाड़ने हैं, तो क्या मीडिया उसे कवर करता? नहीं करता. केजरीवाल ब्रेकआउट हो गया जब वो ब्रेकआउट हो गया. आज वो पॉसिबिलिटी नहीं है, और तभी भी वो ब्रेकआउट हुआ क्योंकि बीजेपी ने उसको ब्रेकआउट होने दिया. अगर नहीं देती तो नहीं होता. बिकॉज ये अभी स्टेट है कि पीपल्स मूवमेंट से कोई भी नेता बड़ा नहीं हो रहा. आप देखिए ना, कोई भी जो बड़ा होता है, जो भी अच्छी बात कर रहा है, उसको खत्म करके मतलब आम सिंह आपके साइड पे जो पॉपुलिस्ट पार्टीज है जैसे कांग्रेस या बीजेपी, उनमें कोई अच्छे थिंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, ओरेटर्स ये भी नहीं है. पर तो भी उनको कितना पॉजिटिव स्पेस मिलता है. लाइक तेजस्वी सूर्या, लोग बोलेंगे कि ओ ही इज अ यंग एमपी एंड ऑल. आई मीन कम ऑन मैन, लाइक कंपेयर हिम टू एनीबॉडी. हमसे जेएनयू के कोई रैंडम लोग में 4 बजे नॉक करके बोलो किसी को कि कुछ डिस्कस करना हो, ज्यादा आर्टिकुलेट करते. बट आम सिंह आपके तरह से कोई तो ढंग के तैयार करो, नहीं तो मीडिया को अपना काम करने दो, पीपल मूवमेंट से लोगों को आने दो. और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात नहीं है. देखो, कोई भी जर्नलिस्ट भी आज के टाइम पे उनके अगेंस्ट खड़े होकर बोलता है, जैसे आतिश तासीर ने किया. तो टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा उसने, और उसको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं. कोई जर्नलिस्ट आता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर भी खड़े होकर बोल देता है, कोई IAS IPS ऑफिसर होगा, उसको भी जैसे टारगेट किया जाता है. पूरा मोदिया साथ में डिफेम करता है सबको. हाँ
हाँ मतलब एनजीओज को ले लो और ये उस क्वेश्चन पे फिर वापस भी एक तरह से आ जाता है जो बॉलीवुड की हम बात कर रहे थे। हाँ। अगर कोई आज के दिन बोल भी देता है ना खड़ा होकर, तो देख ले रहे हैं मोदी और उसकी किस तरह से डिफेमेशन करेगा। बिल्कुल, मतलब किया भी है, नसीरुद्दीन शाह का किया है और जावेद अख्तर का भी किया है बहुत बार। तो आपसे कोई कुछ बोलता है तो मीडिया प्रकाश राज का भी हो गया। हम सिंह अगर कोई उठाता भी आवाज तो उनको क्लियर ये नहीं है कि कैसे उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। और उनकी 4-5 घंटे है जहाँ पे लोग कूदते हैं और आपको डायरेक्ट करते हैं आओ भाई इधर गिरो, और हमारी भी आदत है हम फिसल जाते हैं इसमें। एंड आई एम सो हैप्पी कि ध्रुव इधर नहीं फिसलता। दिस इज और मेरा क्वेश्चन ये है, सो कुछ साल पहले तक मेरे को ये लगता था कि शायद एजुकेशन is the problem why people don't understand what's happening, and obviously media sort of added to that, right? Media ने बिल्कुल गवर्नमेंट के साइड में होके, obviously मीडिया की जगह गोदी मीडिया बन गया, right? But then I realized, and I started talking to some people around me at work and all of that. People who are very educated, people who are savvy, जो सिर्फ TV नहीं देखते हैं और वहाँ से अपना information नहीं लेते हैं, who people who are respected, people who I thought that they would be able to really look at things very very objectively and would be able to make up their mind on what's happening or what's not happening. Even those people I find sometimes, for example, I mean, I have some work, colleague, I really respected him until I started talking to him about Modi ji and Hinduism and all of that, right? And then I just realized, I mean, 1.5 साल काम किया था उनके साथ और बहुत I really looked up to him. And then he started talking about Modi ji और एकदम पलट गया, उनको जितना information दो जो भी, somehow people don't think objectively. So is this only me who's facing this? और या आप लोग को भी ऐसे लोग मिलते हैं जो जानते हैं, जो savvy हैं, जिन्हें पता है? बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे फैमिली में ऐसे लोग मिलते हैं। ये एजुकेशन की तरफ हमारा एक बायस है। We take people who are educated to be people who are smart, well informed, articulate, balanced. I think ये एक पर्दा है एजुकेशन का कि आपको लगता है अगर बंदा एजुकेटेड है, ये जो हमारी नॉर्मली बातें सुनते हैं अच्छी फैमिली से है ये वो, तो ऑब्जेक्टिव होगा। आई थिंक इस पे ध्रुव भी बताएगा आपको। आई डोंट थिंक एजुकेशन का इतना कुछ लेना देना है। आई थिंक इसमें मीडिया का ही लेना देना है बेसिकली, कि जिस तरह से मीडिया जो इमेज प्रोजेक्ट करता है और जो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, दो तीन सोर्सेज से अगर खाली सिर्फ मीडिया लिखा होता तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन इन्होंने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी अपने शुरू किए हैं, ये सोशल मीडिया पर भी इनका पहले से एक टच था, जिसकी वजह से एक इंसान को 4-5 सोर्सेज से एक ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। वो मीडिया चैनल्स पर भी वही सुनते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भी उन्हें वही सुनने को मिलते हैं और अपने पड़ोसियों से भी वो सुनते हैं। I am Ayush, I'm from Delhi, and I agree with the art thing. The art has transformed Delhi and works really well. And I'm here with my friend, housemate. He is from Islamabad, and we are a big fan of your work. Then just delete all the Modi jokes. You can't have them. Junaid Akram is, I'm a big fan of Junaid Akram. He's a Pakistani comedian. I hope you follow him. I find him fucking funny. Nice, awesome. So the question is that we stay together, and in people there is no hatred. He makes biryani for me, I make food for him, and we have a lot of people. So in people in India and in Pakistan there is love. But जैसे मंदिर का issue solve हो गया, so now BJP can't brag about मंदिर. When do you think India-Pakistan issue will solve and Arnav and other stupid people will stop about that issue? I don't think India and Pakistan issue will stop because the people are very क्या बोलते हैं, like they are, जो एम उन्होंने रखा है ना, और जो पास्ट का बैगेज है कि मुगलों ने आके हमें रूल किया, फिर गांधी का एंगल और नेहरू का एंगल और ये वो, and the party which is the backbone, like the organization which is the backbone of the BJP has a plan of Hindu राष्ट्र and अखंड भारत। तो ये दोनों चीजें जब तक पाइपलाइन में है और लोग डिस्कस करे जा रहे हैं, तो डिस्कशंस तो इस पे होंगी। आई थिंक जब भी कोई पाकिस्तान बोलता है मेरे सामने और पाकिस्तान में मेरा ओपिनियन मांगता है, मैं उसको सीधा पूछता हूँ कि तेरा इंडिया में क्या ओपिनियन है? हम इंडियन हैं पूरी तरह, पासपोर्ट दिखा सकते हैं,
तो एज एन इंडियन अगर हम सिर्फ इंडिया डिस्कस करें लोगों के साथ, तो आई थिंक वो पॉजिटिव स्टार्ट होगा. I think even the average Indian does not hate the average Pakistani. Like, Manmohan also said this important thing. He said most news debates in India जो पाकिस्तान के ऊपर होता है, which is not about Pakistan as such, पर उनको पाकिस्तान का नाम ले लेके इंडिया के मुसलमानों के गलों में एक घंटी डालनी है कि हाँ वो नाम तो पाकिस्तान का ले रहा है पर वो बातें वही कर रहा है जो राम मंदिर के डिबेट पे बीजेपी का स्पोक्सपर्सन एक मुसलमान आदमी को बोले. तो ये इंडिया पाकिस्तान डिवाइड, इफ यू सी इट, it stems from the Hindu-Muslim fault line divide that already exists in India. तो ये खत्म हुआ तब आई थिंक पहले ये तो हो, वो तो बहुत ही मतलब डिस्टिंक्ट रिंग लग रहा है. बट आई थिंक अगर पॉलिटिशियंस इस पे एक्शन लेते हैं कि अगर कोई जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था कि साथ में आने की कोशिश करते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. मतलब हाँ नहीं हुआ यार, मतलब आप देखो बहुत ही हिस्ट्री देखोगे ना, अगर आप फ्रांस और जर्मनी जो आज हैं, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले इंडिया पाकिस्तान जैसी हुआ करते थे, लेकिन इनके पॉलिटिशियंस ने साथ में आने का एक्शन लिया है. इन्होंने सोचा कि नहीं बस बहुत हुई लड़ाई, हमें साथ में आकर काम करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को बनाना चाहिए, तो लोग भी उसके साथ में जुड़ गए. 3 questions more. So I have the mic already. Okay, thanks. Here. Yeah. On your left. Yeah. Here. Oh, hi. Okay. So my name is Adil, and I honestly think that you guys are the opposition of India in a way, not completely. Like little bit. So I think the purpose of your video was just to like show us how we are in certain things in our country back home. So if it's a phrase when you use it, how do you think we can practically our nation from all this? So I think the first process is identifying that there is an issue. Like the moment that we started speaking, and Dhruv has been doing that for a very long time, he's been consistently talking about the economy. So of course they haven't termed it as a recession or anything of that sort, but at least some people in the government have acknowledged at some point that there is a slowdown. So I think the acknowledgement part is most important. और हमारा काम काफी सिंपल है. Like we will not like at least I will not term myself as something like of a great role. I'm just saying if you see something and if you can say something witty on it, in my case I'll just say it and put it out there and move on. I don't take the pressure of being the opposition or setting a narrative or giving like a positive way to people. I just think in your that's where I come in actually. Yeah, I think that's why I intentionally try to set the narrative and change the agenda towards something positive. And जो एम्स्टर्डम में मैंने वीडियो बनाया ना, ये अभी 1 महीने बाद अपलोड करूँगा. ये भी इसी से रिलेटेड होगा. यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग है, इससे इंडिया कैसे सीख सकता है. और मुझे लगता है जब लोग इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे, तब अपने आप ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और फिर पॉलिटिशियंस तक पहुंचेगी. फिर पॉलिटिशियंस को लगेगा कि लोग केयर करते हैं इन इश्यूज के बारे में, तब वो कुछ एक्शन लेंगे इस करेगा. बट आई थिंक ये बहुत ही मतलब ग्रैंड लेवल पे अटेम्प्ट है. But what you are unknowingly also doing, and that needs to be acknowledged, is that today you are a YouTuber who speaks the truth, who creates videos which are factually based and not based on populist narrative, and you have a career. So now you are clearing the path to a lot of other YouTubers who will do the same thing. And that is, I think, how you grow at your own level. Like आज मैं देखता हूँ कि काफी हमें बच्चे के वली रहमानी and there are few other Kumar. I see a lot of people who seem like they have watched Dhruv and they have said like, oh, he can do it, I can do it also. So I'm saying at that level also, there are comedians who are like, you can talk about politics and you can put your view out there and you can also travel the world. So there is something, there is a business option. So there was previously a question around saying why we don't have talent opposition and we don't have new politicians coming to the fore, right? My question to you is, why not you guys, like comedians? You have a valid platform, you reach out to people, so why not comedians? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये जोक्स अच्छे मारता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉलिटिशियन भी अच्छा बनेगा. और मैं अगर अच्छे वीडियोस बना पाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी गवर्नेंस कर पाऊँ. मेरी स्किल है वीडियो मेकिंग, मेरी स्किल है कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है समराइज करके. सबका एक रोल है यार सोसाइटी में. हाँ, वो
ऑनेस्टी प्ले करो, बाकी लोग करेंगे अपना रोल प्ले। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो अच्छे लोग हैं गवर्नेंस में, वो इतने अच्छे नहीं अपने आप को पब्लिसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा रोल आता है कि उनको पब्लिसाइज किया जाए। So I think that is the job, like जहाँ हमको स्कोप मिलता है कि लोगों को हम प्लग कर सके, जैसे आतिशी है, she is great, she is an educationalist, she is a balanced person, अगर उसको उसके काम को अच्छे से दिखाने का हमें चांस मिलता है तो हम वो करते हैं। But I don't think ये फुल टॉस पे आउट होने वाली बात है कि अगर किसी से, मेरी बहुत बड़ी कहावत है इंडिया में कि अगर किसी से दुश्मनी है तो उसको चुनाव लड़ा दो। Because मैं वो लेवल पे गंदा हो नहीं सकता यार। Like I don't think I can look into people and पूरा ही झूठ बोल दो। तो I think और काफी लोग हैं वो स्पेस में जो एक बहुत ही सही काम कर सकते हैं ऑनेस्टी के साथ, और हमारा काम है उनका अच्छा काम हाईलाइट करना। एग्जैक्टली, हर स्पेस में है। आप जैसे इकोनॉमिस्ट देखोगे, रघुराम राजन हो गए या अभिजीत बैनर्जी हो गए, तो हमारा काम है कि उनको पब्लिसाइज करो, अच्छे लोगों को उनको लेके आओ अपने प्लेटफॉर्म पे, उनकी चीजें शेयर करो, उनके नैरेटिव फॉलो करो। बट पॉलिटिक्स ज्वाइन करना आई डोंट थिंक हमारे बस का है। और दूसरा, आप देखिए कोई भी पॉलिटिक्स अब ज्वाइन कर सकता है, तो ये दो पार्टी के बीच में कांग्रेस भी, they are not going to support an independent candidate or a person with an independent voice. They also need an activist today employed tomorrow. मतलब अगर घूम फिर के जाके राहुल गांधी जी और उनका विजन ही बोलना है तो इससे तो कॉमेडी कर रहा है, वही बेटर है। Opposition leader, and for one of the main reasons of that is the unwillingness of Congress to shift the crown from Gandhi family. But I'll tell you one thing very objectively about this. I'm no fan of anybody in the Gandhi family, but they have shifted the crown from Rahul Gandhi back to Sonia Gandhi. But the media, we're still talking about, see, Rahul Gandhi currently is an MP from one constituency, that's Wayanwad, and nothing else. But the media still treats him like he's the most important person in Congress. The media will not shift focus from Rahul Gandhi. वो आदमी इतना स्क्रूटिनी के अंदर है कि वो सांस भी ले ले तो 4 डिबेट हो जाए। तो नहीं, अगर पार्टी छोड़ भी देना राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पार्टी छोड़ दे भाई, अगर वो एमपी और वायनाड दोनों से हार जाता तो बीजेपी उसको राज्यसभा सीट दे के ले गया। तुम समझ नहीं रहे उसका इम्पोर्टेंस। Where do you see what kind of content that you create and the kind of stand-up you do? Does it would really bring some change in India? Like it's nice to have some videos, but how do you fight with the media out there in India? Parents को WhatsApp पे आप अपना वीडियो भेज दो, but then they send you 10 videos about what is happening. How do you see that turning out? We try our best and we hope for the best actually. हम आउटकम आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी तरफ से ट्राई करें उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें कि हम रिजल्ट भी चेंज कर सकेंगे, इतना तो ये क्वेश्चन है बस। Hi, here. I'm this side. Hi, my name is Diksha. Hi. And so I've seen most of your podcast videos, Kunal. Oh, hi. And so I have one small suggestion for you. Sure. And a question also. So my suggestion is that I really like the video with Atishi and Shweta Shalini. It is one of my favorites. Yeah. So if you ever in your dreams get a chance, then make Kanhaiya Kumar and Tejasvi Surya face to face. I think that will be a really nice video. Yeah, you know, by the way, the next 2 podcasts that are coming out, one is with Kanhaiya and one is with Tejasvi Surya. But both nice. Kanhaiya agreed to come with Tejasvi Surya, but Tejasvi Surya did not. I agreed to come with Kanhaiya because he said I'm a sitting MP, so if I want to come on this forum where I know that you will not agree that RSS is a charitable organization, I need to come alone. But ma'am, I really tried that. I couldn't make it happen. And my question is that if you ever have to get 2 people from BJP, very die-hard, to get on your podcast, I assume that would be Sambit Patra, but who 2 people would you want to choose? So I've tried for 2 people very relentlessly and both of them have rejected me. One has even blocked me on Twitter. One is Subramanian Swamy. उसने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे, और संबित पात्रा तो फोन ही नहीं उठाता। अभी क्या टाइम हुआ इंडिया में? रिलेट हो गया नहीं तो आई वुड हैव जस्ट कॉल्ड हिम फॉर